First 18 years of my life I was obese, 122 kgs heavy. This is me, right? पहली चीज जिसने मेरे को बिल्ड किया कि बिकॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी बॉट, आई लिटरली अर्न दिस वन थिंग. आप लोग काफ़ी लोग ये देख के खुश भी हो गए, सैड भी हो गए, बट वी हैवंट सीन सुपर फास्ट ग्रोथ इन एनी ऑफ द ईयर्स टिल नाउ. तो इस नंबर तक कैसे पहुंचे? कंपाउंडिंग ग्रोथ कंपाउंड हुई है, हमने ऑन एन एवरेज 33% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है. So far we have helped over 300 plus nutritionists, fitness coaches and dietitians start and scale their business to 3 to 5 lakh rupees per month, and some of them have even reached 10 lakh rupees per month. That's a good number, crores, right? What's up guys, hope you are well. Welcome to another training. Today it's more than a training. Today I'll be sharing my business story. So last month I got married. काफ़ी दिन काम भी नहीं किया. आई एक्सप्लेन काफ़ी दिन काम ना करने का मतलब क्या होता है. स्टिल वी कलेक्टेड 72 लाख रुपीज़ कैश इन आवर ऑनलाइन फिटनेस बिजनेसेस. जनवरी में खुद सरप्राइज हो गया. रीज़न फॉर दैट इज आई आस्क्ड फॉर दिस डेटा अराउंड 20th of Feb when I got free from the mini honeymoon and stuff like that. And when I looked at the numbers, I was like crazy. So I thought I'll share my business story and how did I get to this number? What is happening right now? What am I learning? And what can you learn from this? Okay, so notes with some pinch of salt, we don't hit the same numbers every month. This was surprisingly the biggest cash collected month. Not the biggest cash collected month. पहले हम एक Shed 60 चैलेंज नाम का चैलेंज रन करते थे. उन मंथ्स में जब वो चैलेंज रन करते थे उनका कैश कलेक्टेड वुड हैव बीन मच हायर. बट ये कंसिस्टेंट विदाउट रनिंग एनी कैंपेन, specific campaign, this was the biggest cash collected month for us. And most months we do 75 to 80% depending upon the month. For example, last month was जनवरी में पूरी दुनिया मोटिवेटेड होती है. फिटनेस कोचेस भी मोटिवेटेड होते हैं. फैट लॉस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एवरीवन इज मोटिवेटेड. सो दैट्स व्हाट. ओके, सो मी नॉट वर्किंग डजंट मीन कि मैंने फ़ोन ही नहीं टच किया, मैं भूल गया. काम भी है, सब कुछ सिर्फ शादी में लग गया, ऐसा नहीं. I don't believe in doing that to my clients and my team. Everyone has a different style. I don't like taking off completely off work days. सैटरडे भी होता है, संडे भी होता है. आई लाइक वर्किंग अ लिटिल, आई लाइक राइटिंग अ लिटिल, कुछ कर लो थोड़ा बहुत. आई लाइक इट, आई एंजॉय इट, दैट्स व्हाई आई डू इट. कोई ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है. एंड if I wasn't working doesn't mean my teammates weren't working. We have 14 legends working in our companies. So, take that with a pinch of salt. So not working doesn't mean कुछ भी नहीं किया. एक्टिव में थ्रू आउट था. फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, समथिंग लाइक दैट. कोचेस को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोचेस आर गेटिंग स्टक विद एनीथिंग or anything else happening. Wrote daily. Daily writing is a habit which I, for example, writing frameworks like this and stuff like that is a habit because writing teaches you how to think. 6 लॉन्ग फ्रेमवर्क लिखे थे मैंने. स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटी मोटी क्लाइंट्स को कुछ प्रॉब्लम चल रही थी. 2 दिन FB का इवेंट था, उसके लिए भी मैं ट्रैवल कर रहा था इन जनवरी. एंड एक फुल फनल भी हमने क्रिएट किया, 50 प्लस वीडियो एड्स रिकॉर्ड करी and 3 YouTube videos record करे. But again, most days were free. That means I had no planned work on most days. First half of the month, some tasks which I did, वो मैंने आपको clearly mention कर दिए. And main thing was I wasn't worried about the revenue or work, right? Because मैंने क्या expect किया था कि भाई इस month में तो revenue कम होगी because I am not putting in my energies totally. Because शादी है, priority है, that's fine, right? And priority number 1 was still enjoying my big day in Abu Dhabi. I got married in Abu Dhabi. To my long-term girlfriend. If you are interested in that story, open Trained by YVS का page and look at that. Okay, so long story short, I like what I do, so these things didn't feel like work. तो मेरे हिसाब से it was a very chill month for me, and that's what. Also, income from one of our high-level mastermind is not included in this, but 2 consultations included a life coaching वाली. So take that with a pinch of salt. But FBE mastermind, which is flourishing right now, which is scaling right now, उसकी इनकम इसमें कैलकुलेटेड नहीं है बिकॉज अभी तक हमने इट्स अ जॉइंट वेंचर, तो अभी तक हमने चेक नहीं किया. ऑल्सो ये फ्रेमवर्क बनाने का ये मतलब नहीं है कि ओ आई हैव एस्ड बिजनेस, आई एम द परफेक्ट पर्सन. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या दूर, ये तो सच से दूर है. हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आई ऑलरेडी नो आई कैन फिक्स इन माई बिजनेस. एंड नॉलेज में गाइस हमेशा एक चीज़ होती है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू डोंट नो यू कैन फिक्स. सो हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स है अभी मेरे बिजनेसेस में जो फिक्स हो सकती हैं, एफिशिएंट हो सकती हैं. एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, राइट. सो ये बनाने का मतलब नहीं है. लॉट ऑफ यू वुड थिंक ओके वाओ दिस इज अमेजिंग, दिस इज ड्रीम लाइफ, मैं स्टेज पे आके काम करना बंद कर दूंगा. आई ऑल्सो यूज टू थिंक दैट व्हेन आई स्टार्टेड आउट.
and let's talk about my journey. Okay, so first fitness business मैंने start किया by accident. I'll explain how. Okay, so guys, first 18 years of my life I was obese, 122 kgs heavy. This is me, right? This is me after a transformation. थोड़ी पुरानी photo है, but you can see the difference, right? I lost 44 kgs within a span of 8 months. So in 2012, that is like 12 years back, I decided to take charge and start my transformation after several failed attempts. अब आप में से कोई भी ओबीस है या ओबीस क्लाइंट्स के साथ आप वर्क करते हो, आपको पता है ओबीस जो भी है दे ट्राई टू ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट करने की कोशिश करते हैं, बट हमेशा ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज यू वुड रियरली सी अ पर्सन हु इज वेरी अनफिट एंड उसने कभी ट्राई नहीं किया. ठीक है, तो इस वाली अटेम्प्ट में मेरी आई थिंक समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी 12th स्टैंडर्ड की, एंड आई डिडंट गिव अप एंड आई लॉस्ट 44 kgs in 8 months. नाउ इफ आई लुक बैक, काफ़ी गलत तरीके से वेट लूज किया था, काफ़ी मिस्टेक्स करी थी, बट इन दी एंड आई वॉज एबल टू लूज वेट एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली चेंज माई लाइफ. This to this changed my life. You can guess why, right? Okay, so first thing was that it wasn't just because I improved the way I looked. Yes, obviously look improve hui, personality improve hui, everything improved, but it wasn't mainly because I improved the way I looked. पहली बार जब ट्रांसफॉर्म हुआ, ऑब्वियसली मेरे को लगा कि यार this is the I've changed my life because I look better now. That was a very essential part of it. Health was a very essential part of it. But main thing was that it was the first thing I had earned in my life. पहली चीज जिसने मेरे को बिल्ड किया कि because a transformation cannot be bought, I literally earned this one thing. And why didn't I have to earn anything else in my life? Because I belong to a business family. Long story short, right? Dad has a flourishing 10-figure real estate and investment business. नाउ अब मुझे पहले के नंबर्स नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था. तो डैड हैज़ अ नेक्स्ट लेवल बिजनेस एंड ऑलवेज हैड. इट वाज अ वेरी गुड, आई हैड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, आई हैड अ वेरी स्टेबल फैमिली. अब मैं यहाँ पे ये कहानी बताऊंगा कि बहुत स्ट्रगल थी. माई ओनली स्ट्रगल वॉज मी माई सेल्फ, राइट? आई वॉज स्केर्ड ऑफ गेटिंग गोइंग आउट इन द पब्लिक. आई वॉज स्केर्ड ऑफ गेटिंग पिक्चर्स क्लिक्ड बिकॉज ऑफ मी माई सेल्फ, मी बीइंग ओबीस. द ओनली थिंग माई फैमिली आस्क्ड मी टू डू वॉज pass in the exams. And अब ये भी मैं, if I look back and look at that right now, I was smart that way. Smart in the sense कि 2-3 घंटे पढ़ाई करी and I was able to score well. मतलब अब scoring well has a different definition for everybody, but मेरे आए थे 83% in 12th boards, the year which I lost weight. तो weight loss भी हो गया और 83% भी आ गए. Back to this. So all those scores are relevant. 10th के भी, if you care, 8.6 CGPA, something like that, right? So okay, so next was that transformation में main चीज क्या हुई कि यार it made me think and believe that I can also do something in my life. I am also worth something because this was the first thing I had to achieve. Everyone longs for a life like this कि यार family life stable हो, ये हो, but मेरी problem उल्टी थी यार. मेरी problem उल्टी थी. I was born with a silver spoon. Right, so I had to prove myself, right? The first time when I felt that I am worth something, I can do something in my life, was when I transformed. So that way, if I look back, that was one way. It literally changed my life. I'm sorry for my drawing skills, by the way. I don't care much about these drawing skills and the way I'm looking while creating these videos and stuff like that. Okay, so back to this. जब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा था, एक और भी चीज़ था 2012. फिटनेस इंडस्ट्री इंडिया की स्पेशली बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं थी. इंस्टाग्राम नहीं था, ऑनलाइन कोचिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस आई स्टार्टेड लर्निंग न्यूट्रिशन. उस टाइम पे ब्लॉग्स होते थे, ब्लॉग्स रीड करता था. देयर वर दीज वेबसाइट्स, bodybuilding.com टाइप, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर. आई स्टार्टेड लर्निंग न्यूट्रिशन बिकॉज मैंने अपनी जर्नी में बहुत मिस्टेक्स करी थी. यूट्यूब चैनल्स देखता था, देन आई स्टार्टेड लर्निंग न्यूट्रिशन. ब्लॉग्स पढ़ने लग गया, बुक्स पढ़ने लग गया, आर्नोल्ड की बुक एंड स्टफ लाइक दैट. एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग न्यूट्रिशन, हाउ हेल्थ वर्क्स, हाउ द बॉडी वर्क्स, व्हाट इज द न्यू मेथड. इस वाले प्रोसेस में, इस वाले पार्ट में मैंने बहुत गलतियां करी. लिटरली ह्यूमन नेचर से रिलेटेड कोई भी गलती कर सकते हो. इम्पेशंस, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, फाइंडिंग द मैजिक पिल एंड स्टफ लाइक दैट. बट इस टाइम पे मैं काफ़ी लर्न करने लग गया जस्ट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को बॉडी का चस्का चढ़ गया था, राइट? इन सिंपल टर्म्स, बिकॉज that was one way I was showing my worth to myself, right?
So the only way I used to show worth to myself was this, right? So obviously अब 44 kgs कम करा है, तो acquaintances, people at the gym and friends started asking me what's your diet, and I started helping people. यहाँ भी मुझे कुछ कोई मॉनिटरी नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था. दिस इज लाइक 2013 की बात होगी. मतलब बोर्ड्स खत्म हो गए हैं, चिल लाइफ चल रही है, पेरेंट्स सेम ही बात कर रहे हैं कि भाई एग्जाम पास कर लो, दैट इज ऑल यू नीड, राइट? एंड आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल विद देयर डाइट, बिकॉज मेनली मेरे को न्यूट्रिशन का शौक था और न्यूट्रिशन ही अच्छे से आता था. अब के कंपैरिजन में नहीं ऑब्वियसली, बट उस टाइम 2012-13 के हिसाब से न्यूट्रिशन मेरे को अच्छा समझ आ गया था. ओके, सो obviously चीज हुई कि most of the people didn't follow the plan I created for them because of simple reason, no one values free stuff. But I was able to transform people who followed. कैसे मैं transform कर पाया? Obviously I replicated what I did in my own transformation. Second thing was I was able to feel these people because मैंने जो ये mistakes कर रहे थे, I had already made those mistakes in my journey, from impatience, psychological stuff basically. Right? So whenever they came up to me a problem, I had a solution because I had solved it for myself. So one of them, a friend of mine, lost 60 kgs in a short period of time, maybe 4 to 6 months. I don't remember the exact timeline. And he came up to me and said, Yash, you changed my life. I was very happy that, okay, I'm not just useful to myself. I've helped some people. कुछ लोगों ने 5-7 kgs भी कम किया, but main इनकी transformation थी. 60 plus kgs lose कर लिए इन्होंने. 60 प्लस. मैंने खुद 44 करे थे, इन्होंने 60 कर लिया. I was like, wow. And this is when I felt real empowerment in my life. And I was like, okay, I can be useful to others. Because मुझे कोई way नहीं था to be useful to my family because monetarily चलता. I just had to be a good son. I wouldn't say I was the best son back then, but now I'm better for sure. But yeah, right. Next few years, I started learning more and more stuff, making more mistakes with my own transformation. इस वाले पार्ट तक भी मेन मेरे को था कि भाई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को क्रेजी करनी है, एप्स चाहिए, ये वो. सो आई वॉज लर्निंग मोर जस्ट टू टीच माई सेल्फ मोर फॉर माई सेल्फ. देन आफ्टर दिस आई स्टार्टेड परस्यूइंग लॉ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी. आई बिकेम द गो टू गाय इन माई सर्कल एंड कॉलेज फॉर न्यूट्रिशन. किसी को बॉडी बनानी है, पतला होना, पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी, राइट? कूल स्टफ, नो? In 2017, while pursuing law, same logic, law भी same logic पे work कर रही थी, 2 hours of study and I was getting good scores. अब यहाँ पे 83% वगैरह नहीं आ रहे थे, but 60% के आसपास आते थे. And I realized that there's no one who is educating people in India. इस वाले पार्ट में एक और चीज़ हुई थी. मेरी गर्लफ्रेंड थी जिनसे मेरी अभी शादी हुई है. एक बार लड़ाई में मैं कोई इगोइस्टिक बात कर रहा था in relation to money, and my girlfriend told me, what is yours? What have you made in your life? You haven't made a single penny. Something of that sort, she said. And उससे मेरी ego hurt हो गई. एक बार एक और सीन हुआ कि डैड से लड़ाई हो गई. I was shouting at him and stuff like that. His reply was, तू 50,000 हज़ार के सप्लीमेंट खा जाता है. तो इस वाले पार्ट में एक मेरे को ये माइंड में चल रहा था और साथ में ये दो छोटी चीज़ें हो गई. गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई. One thing which I'm very lucky about is that my inner circle, my girlfriend, my family, my friends are very honest to me. They call me out. Right now at this stage of my business also, if I'm doing something wrong, they literally call me out. And I'm lucky that way because I like hearing the truth more than anything else. Right? So थोड़ी planning वगैरह करने के बाद मैंने 2017 में 19th जनवरी को start किया Trained by YVS. मैंने सोचा था अपने बर्थडे पे करूँगा 13 जनवरी को, but 13th को I was very sick. So after the next week, I started Trained by YVS with goal of educating people and making some money. मनी वॉज अ गोल है. अब ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मैं एजुकेशन करना चाहता था. आई वॉज लाइक यार 10-20,000 पर मंथ बना लूँ, दैट्स फाइन, एंड आई हेल्प पीपल, राइट? बिकॉज आई लव्ड ट्रांसफॉर्मिंग पीपल बिकॉज आई वॉज एबल टू रीलिव माई ओन ट्रांसफॉर्मेशन वाया दैट. सो कूल स्टफ गोइंग ऑन. फर्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स आई वॉज टोटली इनटू इट. आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स पहले जल्दी. आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स, मतलब आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट विद इन दी फर्स्ट वीक, आई गेस, राइट? यहाँ मैं आपको बुलशिट कर सकता हूँ झूठ कह के कि बहुत टाइम मैंने स्ट्रगल किया. स्ट्रगल मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में जरूर किया था. अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट 3 वीक्स आई डिड नॉट लूज अ सिंगल kg, बट आई केप्ट ऑन गोइंग. बिजनेस वाले पार्ट में आई स्टार्टेड सीइंग गेटिंग क्लाइंट्स विद द फर्स्ट few days itself. Literally, I made a few thousand per month while online coaching. Right, I started making a few thousands, and this was super cool. One thing which I realized was that why do I have this advantage? My own transformation.
एंड जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन थी. फॉर एग्जाम्पल वो 60 kg वाला फ्रेंड एंड 4-5 ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास डे 1 से थी. राइट, सो दैट ऑलवेज एडेड क्रेडिबिलिटी. राइट, सो मेरे को ये चीज समझ आ गया कि दो गेम है ये मेन, नॉलेज और वैल्यू. दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग पीपल. राइट, यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपको आई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू वाया माई स्टोरी. दैट्स प्रोवाइडिंग वैल्यू. राइट, इफ आई कीप ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू यू, आप यूट्यूब चैनल देखोगे, आप इंस्टाग्राम देखोगे, इफ आई कीप ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू यू, समडे यू वुड बी लाइक यार फ्री में इतनी वैल्यू, what would happen if I pay this person? You would become my client. It's as simple as that. That's my principle. Right, that's my secret. Few months in, I made 6 figures and I was like wow. अब यार 6 figures मैंने earn तो करे, that was a big deal for a person like me जिसने first 18 years of life कुछ भी नहीं किया. But it's 6 figures in comparison with what my dad was making, or my dad still is making, was much lower. ठीक है, बट 6 figures बिग डील, बिकॉज मैंने नहीं सोचा भाई घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस से आई वुड बी एबल टू मेक दिस मनी. बट ये दैट वाज ऑन द मेन प्रिंसिपल वाज आई वाज ट्रांसफॉर्मिंग हेल लॉट ऑफ लाइफ्स. इफ यू वांट टू चेक, 2017 का अप्रैल या मई था एक मंथ, जिस मंथ में मैंने 16 ट्रांसफॉर्मेशंस पोस्ट करी थी. आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर, ऊपर नीचे हो सकता है, बट एटलीस्ट 16 ट्रांसफॉर्मेशंस पोस्ट करी थी. सो इफ यू आर अ कोच who's already at certain numbers, a question for you is how many transformations do you post right now, right? And that's what. So in the end कोई भी business तब work करता है जब आप value provide कर रहे हो. So you need to be a value provider, right? इस वाले part में I didn't care much about money, कोई टेंशन नहीं थी, मुझे मजा आ रहा था. I was enjoying, मेरी लॉ चल रही है, लॉ में भी पास हो रहा हूँ. Life is good and I'm getting some appreciation for my work. Lot of people are coming up to me and saying you have changed my life, right? So crazy. अगेन 6 figures में मैं ज़्यादा केयर नहीं कर रहा था, एज द मनी आई वॉज मेकिंग वॉज मच लोअर देन वॉट आई हैड सीन इन माई लाइफ, एंड इन कॉन्ट्रास्ट विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दैट इज डैड्स बिजनेस और सिंपल पर्सपेक्टिव देखता हूँ यार. एज सून एज आई टर्न्ड 18, मतलब एज आफ्टर लूजिंग फैट एंड स्टफ लाइक दैट, फर्स्ट कार विच आई गॉट वॉज ऑडी. राइट, अब मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, दिस इज द ट्रूथ. राइट, दैट वे माई लाइफ वॉज वेरी चिल एंड सिंपल. So in 2018 and 19, after I finished my law degree, I think it was around the final years, but final years में scene chill हो गया था. मतलब that means I was coaching some of my teachers were helping me even if I was not going for classes at times. So वो वाला part काफी sort हो गया था. And I spent most of my time learning nutrition, physiology. इस वाले part में मैंने बहुत खर्चा करा अपनी education पे. मतलब literally whatever I was making, I was spending. आई वॉज ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, बेन पाकुल्स्की से सीखने जा रहा हूँ दुबई में, यूजीन टीओ से सीखने जा रहा हूँ लंदन में, मसल मिंटोर से सीखने जा रहा हूँ. लिटरली मैंने दुनिया की कोई सर्टिफिकेशन नहीं छोड़ी उस टाइम पे. मतलब जो भी अच्छी मेरे को लेजेंड दिखती थी, आई स्पेंट लिटरली अ लॉट ऑफ मनी. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, बट टोटल मैंने एजुकेशन पे करोड़ में खर्चा होगा, नो मैट इजीली, और करोड़ में खर्चा होगा बिजनेस कोचिंग सीखने के लिए. मतलब अपने बिजनेस कोचिंग लेने से फ्रॉम द टॉप पीपल इन द वर्ल्ड. राइट, सो बेसिकली मेरे दो चीज़ें मैं कर रहा था, कोचिंग कर रहा था और लर्निंग कर रहा था. थर्ड ऑब्वियसली पोस्टिंग कंटेंट. उस टाइम इतना नहीं पता था कंटेंट कैसे पोस्ट करना है, बट लिटरली आई वाज पोस्टिंग जो भी दिमाग में आता था, एंड दैट वाज वर्किंग वेल, बिकॉज तब इंडस्ट्री जस्ट स्टार्ट हुई थी. आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट कोचेस हु वर कोचिंग ऑनलाइन. राइट, 2017. सो यू आर लुकिंग एट एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन राइट नाउ. I did not have overnight success or something, right? Another thing which I realized around 2019 was that I was keenly interested in psychology. दो reasons की वजह से. मेन रीज़न ये था कि मेरी लाइफ में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट यार ये चीज़ मैंने कैसे कर दी. राइट, इन रिलेशनशिप्स एंड स्टफ लाइक दैट आई हैड लॉट ऑफ एंगर इशूज एंड स्टफ लाइक दैट. सो आई वाज लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग साइकोलॉजी. एंड इस टाइम पे बाद में मैं ऑब्वियसली ये भी रियलाइज कर चुका था दैट आई नीड टू रीड डेली, बिकॉज इस टाइम तक मैं ओनली रीडिंग एंड लर्निंग सिर्फ ये कर रहा था कि भाई न्यूट्रिशन से रिलेटेड पढ़ रहा था. बट 18-19 तक क्या हुआ कि यार बहुत चीज़ें इन डेप्थ समझ आ गई जितनी मेरे को कोचिंग के लिए ज़रूरत थी. I still learn, I'm still pursuing certifications, nutrition वगैरह में भी, बट यहाँ से मैंने फोकस शिफ्ट करके साइकोलॉजी लर्न करनी स्टार्ट कर दी. स्टार्टेड लिसनिंग टू जॉर्डन पीटरसन, पर्सनैलिटी पे कोर्सेज करने स्टार्ट कर दिए. इस पार्ट में मैंने कहा कि यार आई वॉन्ट टू टेक माई नॉलेज टू द नेक्स्ट लेवल, लर्निंग टू द नेक्स्ट लेवल. सो आई स्टार्टेड परस्यूइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी. राइट नाउ आई एम परस्यूइंग PhD in psychology, बट थोड़ी सी शादी की वजह से बैक गियर पे आ गई. आई वॉज ऑन ट्रैक, आई वॉज थिंकिंग दैट 2024 के एंड तक खत्म कर दूंगा, बट आई थिंक 2025 के एंड तक खत्म होगी. एंड या सो नाउ आई एम परस्यूइंग PhD in psychology, nutritional psychology, to understand how the human brain works, especially when it comes to transformations. Right,
सो जब मैंने मास्टर्स करी साइकोलॉजी में, आई लर्न साइकोलॉजी लिटरली ऊपर एक बुक शेल्फ है जहाँ पे सारी साइकोलॉजी बुक्स ही भरी हुई है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो I started getting interested in psychology. And another thing which I realized at this market stage was that, people, there is a lot of good content out there. People know how to transform. People know they have to be in a caloric deficit, eat less, move more. ये सारी चीज़ें, कार्ब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लोगों को समझ आ चुकी हैं. Then what was the issue? Right? For a lot of people, issue was psychology. So, psychology मैं understand करनी start कर दी, and, been learning psychology till now. राइट? अभी भी मतलब इफ यू चेक आउट माई ऑडिबल और बुक्स, साइकोलॉजी चल रही है, राइट? अराउंड दिस टाइम आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई टीम एंड टेस्टेड 7-figure months फॉर द फर्स्ट टाइम. अराउंड 18 या 19 में फर्स्ट 7-figure month हिट किया होगा, एंड आई वाज लाइक क्रेजी. देन आई वाज हिटिंग कंसिस्टेंटली 7 figures फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. कुछ मंथ्स लोअर थे, कुछ फास्टर थे. मैं टेंशन नहीं ले रहा था, पर इस पार्ट पे भी मैंने 7 figures भी हिट किए होंगे, तो बिजनेस की मैं टेंशन ले ही नहीं रहा था, मतलब आई मीन नंबर्स की, राइट? इन 2019 हमने लॉन्च किया शेड 60 बाली चैलेंज. 1 सेकेंड. हमने लॉन्च किया शेड 60 बाली चैलेंज, वेयर वी टुक अप 250 एनरोलमेंट्स इन मेरली 7 days. ऑन एन एवरेज 10,000 की एनरोलमेंट थी. सो 7 figures बनाए इन अ वीक, राइट? ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर भी था, बिकॉज टॉप 5 ट्रांसफॉर्मेशन को हमने बाली लेके जाना था. But literally it was like multiple 7 figures in profits, almost, right? So till this stage also I wasn't taking business seriously, and I was like सही है, good है, right? This was good. इस वाले बार में थोड़ा सा मेरे को प्रेशर भी आया psychologically, but literally chill. This was 2019. So यहाँ तक बिजनेस सिर्फ 2 चीज़ों पे रन कर रहा था. Are the number of clients increasing every month? Are the number of transformations increasing every month? मतलब जितनी हम ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, इज दैट हैपनिंग? और मैं पर्सनली कोच कर रहा था, तो मेरी पर्सनली एम्पैथी लेवल वाइल कोचिंग वाज वेरी हाई. तो कोई मेरा ऐसा क्लाइंट था जो फॉलो कर रहा है प्लानर, उसको वो नहीं रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो मुझे नींद आनी बंद हो जाती थी. सो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशंस वर इंप्रूविंग, आई वाज लर्निंग मोर, आई वाज मेकिंग थिंग्स मोर सस्टेनेबल, कोचिंग सिस्टम मोर बेटर, एंड दैट्स ऑल. फर्स्ट क्वेश्चन मैं खुद से ये पूछता था, एंड सेकंड क्वेश्चन आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ, एम आई हैप्पी, राइट? मुझे सिर्फ ओनली स्ट्रेस फील हुआ था इन 7 days में. आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट मेरे को स्ट्रेस फील हुआ था पहली बार बिजनेस का. इस पार्ट में मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दी, इफ यू केयर, राइट? सो बोथ वर +1 थ्रू आउट. प्रिंसिपली दिस वॉज फाइन. प्रिंसिपली अब बिजनेस क्यों ग्रो कर रहा था? 2 रीजन की वजह से, कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स वर गोइंग अप, दैट मीन्स आई अंडरस्टूड हाउ टू मार्केट माई सेल्फ एंड माई सर्विस. सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग ऑफ सर्विस, रेफरल्स, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट? But if we wanted to grow to the next level, this wasn't enough, right? Next level पे जाने के लिए enough नहीं था. Then I started learning proper business. कहाँ से? Number 1, dad. So till now, since last 7-8 years, every evening we walk and I discuss how my day went. Dad discusses how his day went, and I started learning at this part. इस वाले part में ना मेरी ego हट गई थी. इससे पहले बीच में मेरी ego आ गई थी कि आई डोंट नीड टू आस्क माई डैड, बट इस पार्ट तक मैंने रियलाइज किया कि डैड की कुछ एडवाइसेज ने तो नेक्स्ट लेवल ही बिजनेस को हेल्प किया था, ट्रेंड बाय YVS को भी. तो प्रॉपर बिजनेस में लर्न करने लग गया. एंड देन ऑब्वियसली लर्निंग का मुझे शौक था, न्यूट्रिशन वगैरह सीख चुका था, फिजियोलॉजी वगैरह. नाउ आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम टॉप एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड. कोई भी फिटनेस बिजनेस का बिजनेस कोच मेरे को मिले, उनसे मैं लर्न करने लग गया था. एक और चीज़ मैं बताऊंगा, बिजनेस मैंने यहाँ पे लर्न करना स्टार्ट नहीं किया. आई ऑलवेज हैड इंट्यूटिव बिजनेस स्किल्स, एंड दैट्स थैंक्स टू माई फैमिली. डीप इनसाइड मुझे साइकोलॉजिकली क्लियर चीज़ें पता थी कि बिजनेस कैसे वर्क करता है. किसी ने ऐसे सिखाया नहीं था, बट मैं देख रहा था बचपन से. दैट वाज 20 years of conditioning, 21 years of conditioning, right? So when I started learning, tracking numbers, business multiplied, right? एक और भी आपको आप लोग काफ़ी लोग ये देख के खुश भी हो गए, सैड भी हो गए, बट we haven't seen super fast growth in any of the years till now. तो इस नंबर तक कैसे पहुंचे हैं? कंपाउंडिंग ग्रोथ कंपाउंड हुई है. हमने ऑन एन एवरेज 33% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, एंड दैट हैज कंपाउंडेड, राइट? इफ आई लुक बैक इनटू नंबर्स, 33% ग्रोथ रही है, एंड 7 years. गाइस, मेन गेम आपने समझनी, 7 years. आई वॉज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? इसलिए नहीं कह रहा पायोनियर हो, मेरी सुनो, अंडरस्टैंड दैट आई हैव बीन गिविंग टाइम टू दिस, राइट?
Rome isn't built overnight. 7 years of consistency has been given to these businesses, right? So सुपर फास्ट ग्रोथ कोई नहीं दिखी है किसी भी ईयर में. अब नाउ यू वुड थिंक कि आपके क्लाइंट्स को कैसे दिखती है, बिकॉज मैंने जो 7 years में मिस्टेक्स करी हैं, आई मेक श्योर माई क्लाइंट्स डोंट मेक दीज मिस्टेक्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. प्लस सिस्टम्स ऑब्वियसली एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग एल्स. In 2021, I decided to teach business to upcoming coaches and PTs and to grow their fitness business, and we started Fitness Business Accelerator. Check out our IG और YouTube for value. बहुत सारे frameworks, ऐसे detailed frameworks मैं almost daily write करता हूँ. एक करता हूँ Trained by YVS के लिए, एक करता हूँ FBA के लिए. तो you'll be surprised at the knowledge, not the knowledge, at the value, right? So that's all. I take back my words on knowledge. मैं खुद की बढ़ाई नहीं करना चाहता यहाँ पे. But yeah. So far we have helped over 300 plus nutritionists, fitness coaches and dietitians start and scale their business to 3 to 5 lakh rupees per month. And some of them have even reached 10 lakh rupees per month. That's a good number, crores, right? I think 7 of them are crore-patis right now using our NSU method. Results here. अब आप NSU मेथड समझना चाहते हो क्या है, किस मेथड से हम ग्रो करते हैं बिजनेसेस, देयर वुड बी अ लिंक बिलो समवेयर, राइट? और आपने रिजल्ट्स देखने IG पे देखो, यहाँ पे जाके. मैं YouTube चैनल पे भी रिकॉर्ड करने स्टार्ट करूँगा डिटेल्ड केस स्टडी सो दैट यू गाइस गेट मोर वैल्यू. बट अभी फिलहाल आपने रिजल्ट्स देखने तो जस्ट गो देयर एंड हैव अ लुक. इन 2021 आई गिफ्टेड माई डैड अ कार. सो डैड ने मुझे क्या गिफ्ट करा था? Q7. मैंने डैड को क्या गिफ्ट करी? X7. Sorry for my writing. Literally, मुझे X तक नहीं लिखना आता. That's good. Okay, so it was a proud moment, and this was the part when a lot of people realized that what is the power of online fitness businesses. They were seeing me grow, but they were like कि यार क्या ही कर लेता होगा ये, right? नाइदर मैं उस टाइम इतनी ओपनली अपने बिजनेस के बारे में बात करता था, बिकॉज मेरे को थोड़ी वो लगता था कि यार मुझे काफ़ी मन में लगता था यार काफ़ी चीज़ें फ्लूक से चल रही हैं, राइट? बट ओवर ईयर्स नाउ आई रियलाइज ऑब्वियसली दैट्स बिजनेस इज ऑल्सो साइंस. सो डैड को गिफ्ट करी X7. बड़ी प्राउड मोमेंट, बिकॉज ही डिडंट नीड अ लग्जरी कार, बट इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज लिटरली इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? बट मैंने खुद अपने पैसे से करी. दैट वाज आई वाज लाइक दैट आई एम एबल टू गिव समथिंग बैक. एंड ये लोग मॉम डैड एक्चुअली weren't proud of me because of X7. They were proud because hundreds of people called them congratulating me कि यार congratulations, your son has given you a car, right? So hundreds of people called them. वो लोग, my parents actually got proud of that, not of the car, right? This is a phone, nothing else, right? So that is what it was, a proud moment and good. 2023 में हमने reach किया $1 million annual revenue goal in our companies, and we have been hovering around these numbers for the most part. मतलब 80% to 100% depending upon the months. If you're a fitness coach, you understand that some months are like slow. For example, November, December would be slow. January would be fast. Feb can be slow and stuff like that, right? We now have a team of 14 legends ensuring that our goal of changing lives by making it the last time our clients are dieting. We for Trained by YVS, we have built this method which is called the last diet method. Trained by YVS at the rate trained by YVS. So basically, and the other business, Fitness Business Accelerator, right? Where we start and scale fitness businesses online only, right? Last year, मुझे काफी recognition भी मिली, which was a big deal. Apple News top 3 coaches, entrepreneur.com fitness influencer of the year, big deal. Fitness Business Accelerator also featured in the startup edition. Sri Nitin Gadkari, Railway and Transport Minister of India, awarded me Fitness Entrepreneur of the Year. And we were also a part of Entrepreneur 35 under 35, big deal. This was literally a dream for me. And they labeled me as the fitness industry innovator. Big deal for me because मैं बचपन से सपना देखता था कि यार entrepreneur 35 under 35 टाइप चीज में हो जाए. And this happened. And yes, so 2023 में मैंने maximum results reap करे of the hard work, right? Not necessarily, ये नहीं कहूँगा पहले result नहीं था. It was, the whole journey was fulfilling, but इस वाले part में I always used to think around 2019-20 तक मैं सोचता था यार why don't I get these things? Because I am like impacting a lot of lives,
But 2023 was an year, 2023 and 24 was an year when we got recognition for all of these things, which is a cool thing, right? But again, it's not the main thing. It's the main thing is the amount of lives we have changed, right? Including mine. So January 2024, जो first slide थी, we reached an efficiency level where we hit the biggest month, and I didn't work on most days. Neither I was anticipating. मैं तो expect कर रहा था business at least 20% कम जाएगा. Reason for that is I'm getting married. I'm sharing my personal life on social media. A lot of people might not want to become a client at this stage, thinking that I'm busy, right? But ऐसा नहीं हुआ. Again, I was getting married. Neither expected, again, like I mentioned already. But accountant sent this to me around the 20th, not 20th Feb, 15, 16 Feb. I was like surprised. Wow, great number, right? And I was like, nice. And this is the highest level of freedom that you make money without worrying about money, right? This has been one of my principles since the last 2 years that for me peace is more important than anything else, 10 times important than anything else, right? Now I'm teaching the same principles to our high level mastermind, Fitness Business Empire, right? It's a high level mastermind. This is the next level of FBA. FBA is like getting to 3 to 5 lakh rupees. And if you want to get to the next level, then you need FBE, Fitness Business Empire, right? High level mastermind है where 80% of our clients, शायद 87% number था, I might be wrong though, 2x their business in the first month itself. हमने अभी recently start किया December 2023 में, and literally it's a game changer thing. I've invented something very cool, uh, and literally the same principles I've been using on my own business to get to this level, right? And people are loving it, which is a cool thing, right? But अभी इसकी income मैंने FBE की income अभी मैंने नहीं add करी in these numbers, but उसकी जगह 2 consultations की कर ली, so similar. Next goal. What is my goal for 2024? Number one goal is as such मैंने कोई मॉनिटरी गोल नहीं सेट करा है बिकॉज मैं अभी थोड़े से प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ. मुझे दो चीज़ें चाहिए अब फिलहाल. ग्रोथ फेज हो गया, कंसिस्टेंसी चाहिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए. आई एम वर्किंग ऑन दैट. एंड नेक्स्ट इज एक्शन बेस्ड गोल सेट कर रहा हूँ मैं, नंबर बेस्ड नहीं. बिकॉज वेन एवर आई सेट नंबर बेस्ड गोल्स मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है और फालतू का प्रेशर होता है, राइट? इंस्टेड मेरा गोल क्या है दिस ईयर का, दैट आई प्रोवाइड 10x the amount of value of what I provided in the last year. Last year, my focus was learning ads, learning digital marketing in a way that I can grow my business without content. This year, my number one goal is providing more value through frameworks like these, right? Because obviously, more I teach, more I learn, and more I teach, more people want to become our clients. And जितना फॉर एग्जाम्पल यू आर कंज्यूमिंग दिस राइट नाउ, जितना आपने मेरा कंटेंट कंज्यूम किया उतनी आप मेरी वैल्यू समझते हो, उतना हमारे लिए आपको कोच करना और आपका बिजनेस स्केल करना इजी होगा. सेकंड, अगेन साइकोलॉजी है ये, मोर वैल्यू यू प्रोवाइड समडे और अदर यू विल बी लाइक भाई बिजनेस कोचिंग मुझे लेनी है, फिटनेस बिजनेस स्टार्ट या स्केल करना है, आई गो टू दिस पर्सन, राइट? दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड ट्रेनिंग्स ऑन यूट्यूब एंड आईजी, इंस्टाग्राम. सो बेसिकली ये फ्रेमवर्क के सारे नोट्स मैं पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, वीडियोस हेयर, राइट? अब आपको सुनने में ये बड़ी काउंटर इंट्यूटिव चीज लगेगी कि यार ये फ्री में इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, व्हाई वुड समवन बाय फ्रॉम दिस पर्सन? बट this is what I've learned. This is the best business strategy. I've grown the most when I'm teaching the most. Second, when I'm teaching, I enjoy this process. I find it fulfilling. Right? I love teaching. I like teaching, right? So that is also cool. Right? And along with this, more results for clients, because ये तो मैंने आपको सबसे पहली चीज ये बता दी कि यार मेरे को ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर रिजल्ट्स फॉर क्लाइंट्स था. ठीक है. नेक्स्ट इज मोर वैल्यू टू एवरीवन एल्स. सबको वैल्यू प्रोवाइड करो एज अ ह्यूमन एंड यू विल ग्रो. इट्स अनडाउटेडली, मतलब इफ इस ट्रेजेक्टरी पे चलते रहूं, आई डोंट लाइक एस्टिमेटिंग नंबर्स, बट आई विल बी इजीली एट 80 लाख रुपीज पर मंथ एंड इवन 1 CR पर मंथ विद इन द नेक्स्ट ईयर, राइट? गोल क्या है? प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू, चेंजिंग मोर लाइफ्स वाया फ्री कंटेंट, एंड ऑब्वियसली चेंजिंग lives of my clients on a NOS, that is at a faster speed, right? जी वैगन भी आ रही है, डैड को तो गिफ्ट कर दी थी, अब मेरी भी आ रही है. आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, कल परसों बात हुई है, सो दैट्स कूल. सो सो मेरे को 100% तो देना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट अ चीप कार. सो 100% फॉर दैट भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसा नहीं कर सकते कि वट एवर प्रॉफिट्स यू मेक कार में ही लगा दिए. सो ऑब्वियसली, बट अगेन
गोल मैंने एक्शन बेस्ड करें कि मेरे एक्शंस राइट होंगे तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे सूनर और लेटर, एंड दैट इज द फोकस। एंड या, सो इफ यू आर न्यू हेयर, पहली बार आप ये देख रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, right? Then I would say that you are in for a ride. One second, I'm trying to erase something. Okay, so if you are someone who's here for the first time, you'll have a lot of fun. Why? Lot of value coming your way, lot of detailed case studies coming your way. This year what I'll do is, earlier अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन डाल रहे थे, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, 0 to 5 lakhs, 0 to whatever, 3 lakhs to 10 lakhs and whatever. Now this year I'll post detailed case study mentioning कि यार किस स्टेप में, फॉर एग्जाम्पल किस स्टेप में हमारे क्लाइंट ने क्या किया जिसकी वजह से ग्रोथ आई, सो दैट यू गाइस गेट मोर वैल्यू आउट ऑफ इट. एंड also, check out past frameworks and videos. If you're new here, आपको past frameworks and videos देख लेने चाहिए, बहुत value provide करी है, and you'll love it. I've recently started this, but you guys will love it, right? Next is follow, subscribe, share. Instagram पे हो तो follow कर लो, YouTube पे है तो सब्सक्राइब कर लो. आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड, कोई फिटनेस कोच इससे हेल्प ले सकता है तो please share it with them, right? So that you stay up to date with high value resources. Look at the other. अब मैं ये नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब ऐसे कर लो, कोई और वीडियो पे जाओ, वैल्यू देखो कितनी प्रोवाइड हो रही है, right? If you like it, if that resonates to you, good. I'll also be sharing the goof ups, mistakes I made and lessons I learned in my own business. ये बहुत important है आपके लिए, so that if I am making the mistake, you don't repeat it, right? Because last month I realized, I'll tell you one very recent mistake. लास्ट मंथ आई रियलाइज्ड, जो मैंने फनल बनाया और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी में खुद के लिए यूज की, मैंने ट्वीक किया था दिसंबर में, that got me negative results. Right? So that was one of the lessons, and I'll share all of these things. And yeah, and we'll also be sharing journey and growth of 300 plus online fitness businesses. We are helping uh, grow from zero to multiple six figures per month, 5 to 7 lakh rupees per month, using Fitness Business Accelerator, and journey of 23 plus online coaches to seven-figure months. 25 plus the, but I just kicked two people out of the mastermind, because I don't want to give my energy to people who are not coachable or not good people. And that's what. So basically, ये journey भी यहाँ ही share होगी. I'll be sharing this journey also. And so basically, if you want to start your business, this is for you. If you want to get to multiple six figures per month, this is for you. If you want to set up a crazy service, this is for you. If you want to take your business to the next level, 10 lakhs, 7 lakhs, 9 lakhs, 10 lakhs, then this is for you, right? You want to build a team like mine so that you are able to enjoy your life, then this is for you, right? We believe in 6 core principles. Number one, value, not six actually. Number one is having the knowledge, building a great service. That's the first principle, the most important principle. That's the first thing which we do at FBA also. सबसे पहले हम आपकी service build करते हैं so that you are able to get results. Second principle which we work on is providing a lot of value, choosing your niche and being the number one in your niche. If you work with me, my goal would be eventually you are seen as the number one, not nothing else. Number one or number two, nothing else. Next principle is we teach you how to provide value in a way that people are like, okay, if so much of value is coming for free, this person can change my life. Then how do we convert prospects into high paying clients who pay us the value we deserve? मैं शॉर्टकट्स या गिमिक्स में बिलीव नहीं करता कि यार आप कोई स्क्रिप्ट यूज कर लो, कोई मैजिकल चीज कर लो जिससे आप स्कैम कर लो लोगों को. नहीं, लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना तो यू हैव टू बिल्ड बिजनेस ऑन प्रिंसिपल्स. सो प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस बिल्ड करेंगे. देन हाउ डू वी कीप आवर क्लाइंट्स फॉर लॉन्गर? रिटेंशन. Selling a new person is 7 times harder versus keeping the same clients for longer, right? We create system to get new clients, and then we create systems to make sure our clients stay with us longer, long term. And you have monthly recurring revenue because that's the highest level of freedom. And then how do we scale all of these things? With a team and with funnels, with everything. Literally, FBE may be, I'll apply all the principles we have been applying at Trained by YVS and FBA to grow them. And that is what it is, guys. Thank you for watching. Long video. See you on the other side. Don't forget to subscribe, share, and follow. Thank you and bye. Questions are always welcomed in the comment section. Thank you and bye.